हेलो एवरीवन एंड कैसे हो बच्चा लोग? जैसे भी हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। पर ये वीडियो है ईस्ट बंगाल के ऊपर एंड दे आर इनक्रेडिबल रिजल्ट्स इन लास्ट फ्यू वीक्स और लास्ट फ्यू डेज, बोथ मैन और वुमेन एंड काफी अच्छा रिजल्ट्स इन एएफसी कंपटीशन। बट फॉर मी it's a very good thing to see some clubs performing well in AFC competition. पर देखो, मेरे को क्या लगता है कि ये जो इस बंगाल परफॉर्म कर रही है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर कर रही है, क्योंकि आप देखो हमारा जो फुटबॉल सिस्टम है बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्टेबल नहीं है। इट्स इंक्लूड्स लॉट ऑफ वेरिएबल्स जो हम लोग सोच भी नहीं सकते एंड इट्स वेरी what's it like? It's like your floor is on lava type of stability that is Indian football, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी हमारे इस बंगाल इतना अच्छा परफॉर्म करी एफसी कंपटीशन में। इट्स इनक्रेडिबली यू नो एक्सेप्शनल एंड वर्दी ऑफ लॉट ऑफ प्रेज, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा इस बंगाल की हिस्ट्री देखना चाह रहा था। मैं देखा कि ये जो क्लब है, it's already been doing these things in the past. I mean, ये पहले भी करते थे, पास में भी ये पहला इंडियन क्लब था जो इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता था, एशियन कप। इफ यू रिमेम्बर, इन वो एशिया वो जीता था। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट उन्होंने जीता है, एशियन कप जीता है। उसमें बहुत सारी टीम होती है, बैंकॉक की टीम होती है, आई मीन सॉरी थाईलैंड की टीम होती है, वियतनाम की टीम होती है ना, एशियन रीजन ऑफ एशिया। बट यहाँ हम बात करना चाहेंगे कि अभी क्या हुआ है। अभी ये हुआ है कि ईस्ट बंगाल क्वालिफाई किया है एफसी एसीएल 2 के लिए, एफसी एसीएल 2 के लिए। एंड it's a second tier competition of AFC competitions. The first is ACL and then ACL 2 and then there's ACL conference trophy, something like that, ठीक है। तो ACL 2 के लिए मेंस टीम ने क्वालिफाई किया है और वुमेन्स टीम ने अभी क्वालिफाई किया है एफसी के एलीट कंपटीशन में, एफसी चैंपियंस लीग, और पिछले बार भी क्वालिफाई की थी ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम ने, बट वो बहुत नैरो मार्जिन से वो नॉकआउट्स नहीं रीच कर पाई। बट दे वो लॉस्ट 2 गेम्स एंड आई थिंक एंड ड्रू एंड वन 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 वन, सो दे वर ऑन 3 पॉइंट। उसके बाद कि ये हुआ कि दे लॉस्ट ऑन गोल डिफरेंस, आई डोंट पता नहीं मेरे को, बट दे डिडंट क्वालिफाई पिछला एडिशन में। पर इस बार क्या हुआ है, इस बार इन्होंने 3 मैच खेला है, तीनों मैच शायद मलेशिया में हुआ था, एक मैच तो मलेशिया की टीम के साथ ही हुआ था और दे क्वालिफाइड। 3 का 3 जीती ब्रो, एक मैच तो 12-1 से जीती। आई मीन दैट्स क्रेजी। इस बंगाल की जो वुमेन्स टीम है एंड they're doing they were like Barca Femini, that match where they scored 12 goals. So it's great to see both men and women of East Bengal football team doing incredibly well. और देखो ना आपकी, तो मैं वो सर्च किया कि चलो देखते हैं कि ये हिस्ट्री क्या रही है इस बंगाल की। इस बंगाल इज सिमिलर टू इंटर मिलान, एटलीस्ट टू मी, बिकॉज मेरे को ये पता है कि एसी मिलान से ही इंटर मिलान बना। तो सम वहाँ स्टोरी ये था कि एसी मिलान के सिर्फ इटालियन प्लेयर्स को खिलाना चाहते थे, दैट्स व्हाई थिंग्स वर नॉट good with some players. They wanted an international players, they wanted international players to represent AC Milan, but that didn't happen. Therefore they decided to go their own way and founded Inter Milan. That's why Inter का मतलब ही वहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल, समझा? तो समझा, I mean, of course you know this. If you know this story, then good, and if you didn't know this story, आज आपको एक नया स्टोरी पता चला। So वही, and इस बंगाल भी सेम स्टोरी है। मोहन बगान के साथ ही था एंड देन शायद एक स्टोरी है, मैंने शायद पढ़ा था विकीपीडिया पे कि एक डिफेंडर्स को ये अपने टीम में 11 में जगह नहीं मिली, दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू पार्ट अवेज विद मोहन बगान और डिसाइडेड टू मेक दिस टीम कॉल्ड ईस्ट बंगाल। और धीरे धीरे, और ये इस बंगाल की हिस्ट्री में आप देखो कि इन्होंने सबसे ज्यादा कलकत्ता कप जीते हैं, सबसे ज्यादा दुरंत कप का रिकॉर्ड भी इन्हीं का है। हाल ही में अभी फाइनल हुआ था मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल, दे थ्रैश्ड मोहन बगान, सो इट्स अ गोल्डन पीरियड। इट्स लाइक 3-4 दिन जो हो रहा है लास्ट वीक, यू नो
it's been a golden days for East Bengal. देखो आप men's team are doing well, female team are doing well, and crazy scenes, you know. So yeah, तो मैं ये बोलना चाहूँगा ये what I like about East Bengal is that ये सिर्फ domestic level पे नहीं perform कर रहे, they are also performing at international level. They are translating their performance at the international level, and that's what puts them apart from other ISL clubs or Indian clubs. और क्योंकि देखो आप AFC competition में जाएंगे तो they will face against bigger teams, tougher teams, and they can get coefficient points, which is good for Indian football. You know, the more they win, the more coefficient point हमें को मिलेगा. उसके बाद उससे हम ये कर सकते हैं कि more clubs can qualify from that. So मोहन बगान के फैंस को थोड़ा सा रूट करना पड़ेगा. I know they would not root for them, but ऐसे ही बोलोगे, I mean, they would, if they would root, would not be bad because we need coefficient points. And you know, अब हमारे कोई भी क्लब क्वालिफाई नहीं होती ACL एलिट के लिए डायरेक्टली, सो वी नीड दैट. ACL 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये तो हम लोग को प्रीलिमिनरी राउंड खेलना पड़ा, इवन दो ईस्ट बंगाल वर द चैंपियंस, यू नो. और एक और बात तो मैं भूल ही गया, पिछले सीजन में तो वो चैंपियंस थे. मोहन बगान को आई थिंक लास्ट मैच में हराए थे एंड दे क्लेम द टाइटल. सो ईस्ट बंगाल का तो गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी, तो एवरीथिंग इज अलाइनिंग फॉर देम. और मेरे को नहीं पता था ईस्ट बंगाल कोई क्लब था. आई बी रियल विद यू, आई वाज सुपर कैजुअल, यू नो. 2016-17 में मैं दे रहा था स्टीवन मोंडोजा, चेन्नई एफसी. मेरा फेवरेट टीम चेन्नई एफसी था जब तक जमशेदपुर नहीं आया था, बिकॉज आई एम फ्रॉम झारखंड. तो वहाँ पे यू हैव टू सपोर्ट योर टीम फ्रॉम झारखंड. सो आई स्टार्टेड सपोर्टिंग जमशेदपुर व्हेन दे वर फाउंडेड इन 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मेरे को पता भी नहीं था कि ईस्ट बंगाल एक क्लब है, क्योंकि आई वाज सुपर कैजुअल एंड मोस्टली वाचिंग यूरोपियन फुटबॉल. आई मीन, not even watching that, just few matches here and there. So I was not that, you know, aware of this Indian football scene. But ठीक है, पर अभी देखो क्या हो रहा है कि मेरे को पता चला कि फिर 2019 या 20 में ईस्ट बंगाल आई. एंड मेरे को मोहन बगानी बेटर लग रही थी, क्योंकि ठीक है, अब जो पहले टीम आती है, यू नो, हिस्टोरिकली अब मेरे लिए तो वही था ना कि मोहन बगान पहले आया. तो you know, I would have slight preference towards them, but East Bengal, I have to praise them. You know, what they are doing what they are doing, that should be replicated by other clubs. You know, performing at international level, such a good thing that is. You know, and I think पहले मैं हिस्ट्री में मैं जानता हूँ तो ईस्ट बंगाल को बेसिकली बोला जाता है इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल की जो रहती है ज़्यादा सपोर्ट करती है. ये थोड़ा सा डिवाइड, एंड आई एम नॉट मेकिंग जनरलाइजेशन, बट that's what I wrote. That's what I read in Wikipedia. कि ये इमिग्रेंट पॉपुलेशन ज़्यादा सपोर्ट करती है. I could be wrong, and I'm of course नॉर्मल पब्लिक भी करती होगी, but that's just what I read there in the Wikipedia pages. And और ये भी कि वो जो आपका वो जो उनके सिंबल है, थोड़ा सा वो क्या नाम है, उसमें आप देख सकते हो कि वो है मशाल टाइप्स की. तो एक साइड प्रोटेस्ट हुआ था 90s 30s समथिंग लाइक दैट. सो दे वर डिनाइड ऑफ समथिंग ऑफ अ प्रमोशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ उन लोग को डिनाई कर गया था. तो वो बहुत सारे फैंस आए थे उनके और आप मशाल लेके आए थे, एंड दैट्स हाउ दैट बिकेम देयर सिंबल. सो लॉट ऑफ हिस्ट्री. ईस्ट बंगाल अभी नहीं बनी है, यू नो, ये बहुत पहले से है और काफी बड़ी क्लब है. मेरे को तो ashamed फील हो रहा था कि मैं इनके बारे में पहले क्यों नहीं जाना. दे आर सच ए लेगेसी क्लब. एंड you know, Mohan Bagan and East Bengal, 3 big clubs of West Bengal. और काफी मेरे को पता चला, मेरे को ये भी पता चला कलकत्ता लीग कितना पुराना है. एंड इट्स ग्रेट टू नो दैट वी हैव सच कल्चर, ग्रेट हिस्ट्री ऑफ क्लब्स. क्योंकि आप IPL में देखो, क्रिकेट का कोई ऐसा है नहीं इसकी हिस्ट्री इतना पीछे जाती है. तो you know, स्टार्टिंग हुआ था 2008 से. So I'm happy that we have some clubs that have history going back to 100 years, you know, because that is legacy. And it's बहुत अच्छा है. मेरे को लगा कि हम लोग में भी ऐसे clubs है. Because and I think just we need to make this sport profitable, and somehow we will be the big dogs in Asia. But until then, I think
ऐसे ही ईस्ट बंगाल जैसे बाकी सब क्लब, बाकी सारे क्लब्स को परफॉर्म करना पड़ेगा एएफसी कंपटीशन में, तभी आपकी प्रोफिशिएंट पॉइंट्स आएंगे एंड देन वी विल गेट रिकॉग्नाइज्ड, यू नो. सो या, let's see how long it takes for Asian, sorry, an Indian club to reach Club World Cup. It's not far fetched. ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ब्रो, क्यों नहीं हो सकता? अरे अब न्यूजीलैंड का जो क्लब है वो सब साउथ वेल्स एफसी खेल रहा था, you know they got huge money for club world cup जो पिछला साल हुआ था, पिछले पिछला साल if I'm not wrong. So क्यों नहीं खेल सकते? Of course we can play but just need that injection of financial power. बट देखो क्या होता है, मैं तो चाहता हूँ कि ईस्ट बंगाल जैसे बाकी सब क्लब परफॉर्म करें एंड देन वी विल somehow see our local clubs performing at the highest level and वो लेवल पे जहाँ पे you like to see them compete against the best to be the best. So yeah, thank you East Bengal, and you know, even though my favorite team is Jamshedpur FC and they don't even exist, but I love that whatever you are doing right now, you know, is praiseworthy because East Bengal और के fans को मैं वही बोलूँगा कि incredible whatever the players are producing. So despite the challenges जितने भी हैं Indian football scene में, so yeah, that's the end of the video. मैं बस खाली वीडियो ही बनाना चाहता ईस्ट बंगाल का, basically you know highlight करना चाहता था what they have achieved. So you know I could be wrong about few things that I have said in this video क्योंकि डिटेल रिसर्च शायद मेरे से नहीं हुआ है, मेरे को लगता है आई शुड मेक अ डिटेल वीडियो है someday. I will make that, but till then इतना ही था इस बंगाल. I hope they continue this thing. Domestically नहीं भी चलेगा but internationally it is required. So I hope they qualify for the knockouts in ACL 2, and for the women team they should also qualify from their groups. So yeah, I'll see you again in the next video. Till then, cheerios.